तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर सुंदर विनायका सुंदर विनायका सुंदर सुंदर विनायका सुंदर विनायका शुभमंगलदायक विनायका शुभमंगलदायक विनायका शुभमंगलदायक विनायका शुभमंगलदायक विनायका विघ्नकोटिहर विमल गजानन विघ्नकोटिहर विमल गजानन विघ्नकोटिहर विमल गजानन विघ्नकोटिहर विमल गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन सुंदर सुंदर विनायका सुंदर विनायका शुभमंगलदायक विनायका शुभमंगलदायक विनायका विघ्नकोटिहर विमल गजानन विघ्नकोटिहर विमल गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन विघ्न हर पाहि गजानन ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन जय जय गणेश जय श्री गणेश 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 जय जय गणेश जय
विनायका साम्ब सदा शिव साईश्वरा साम्ब सदा शिव साईश्वरा साम्ब सदा शिव साईश्वरा साम्ब सदा शिव साईश्वरा गंगाधरा हर गौरी शिवा गंगाधरा हर गौरी शिवा गंगाधरा हर गौरी शिवा गंगाधरा हर गौरी शिवा साम्ब सदा शिव साईश्वरा साम्ब सदा शिव साईश्वरा नर्तन सुन्दर नटन मनोहर सुन्दर नटन मनोहर नर्तन सुन्दर नटन मनोहर नटन सुन्दर नटन मनोहर नाट्य प्रिय कर नटनेश्वरा 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 साम्ब सदा शिव साईश्वरा साम्ब सदा शिव साईश्वरा गंगाधरा हर गौरी शिवा गंगाधरा हर गौरी शिवा साम्ब सदा शिव साईश्वरा साम्ब सदा शिव साईश्वरा नर्तन सुन्दर नटन मनोहर नटन सुन्दर नटन मनोहर नाट्य प्रिय कर नटनेश्वरा 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 साम्ब सदा शिव साईश्वरा अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा 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 सर्वेश्वरि जग
जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी 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 अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा कैलाशपते महादेव शम्भो कैलाशपते महादेव शम्भो कैलाशपते महादेव शम्भो कैलाशपते महादेव शम्भो हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर साई शंकर 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 ओम नमः शिवाय हे त्रिपुरारी भवभयहारी 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 ओम नमः शिवाय हे प्रलयंकर हर हर शंकर ओम नमः शिवाय हे प्रलयंकर हर हर शंकर ओम नमः शिवाय हे प्रलयंकर हर हर शंकर ओम नमः शिवाय हे प्रलय
शङ्कर ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय साई 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 ॐ नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय कैलाशपते महादेव शम्भो कैलाशपते महादेव शम्भो हरि ओम नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय जय शिव शंकर साई शंकर ओम नमः शिवाय जय शिव शङ्कर साई शङ्कर ॐ नमः शिवाय हे त्रिपुरारी भवभयहारी ओम नमः शिवाय हे त्रिपुरारी भवभयहारी ॐ नमः शिवाय हे प्रलयंकर हर हर शंकर ओम नमः शिवाय हे प्रलयंकर हर हर शङ्कर ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हे प्रलयंकर हर हर शंकर ओम नमः शिवाय हे प्रलयंकर हर हर शङ्कर ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय साई ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय साई ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय साई ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय साई ॐ नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय कैलाशपते महादेव शम्भो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविन्द बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविन्द बोलो गोपाल बोलो राम राम बोलो हरि नाम बोलो राम राम बोलो हरि नाम बोलो राम राम बोलो हरि नाम बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो अल्लाह साई यीशु नानक अल्लाह साई यीशु नानक अल्लाह साई यीशु नानक अल्लाह साई यीशु नानक सौराष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो ये नाम सारे है जीवन सहारे ये नाम सारे जीवन सहारे ये नाम सारे है जीवन सहारे ये नाम सारे जीवन सहारे परमानंद के होते हैं
बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राम नाम बोलो, हरि नाम बोलो, राम नाम बोलो, हरि नाम बोलो, अल्लाह साई यीशु नानक, साई यीशु नानक, सौराष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो, सौराष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, ये नाम सारे हैं जीवन सहारे, नाम सारे जीवन सहारे, परमानंद के खोलते द्वारे, के खोते द्वारे, जो नाम चाहो वो नाम बोलो, नाम चाहो वो नाम बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। परमेश्वर श्री साई प्रभु परमेश्वर श्री साई प्रभु ईश्वरामनंदन साई प्रभु ईश्वरामनंदन साई प्रभु परमेश्वर श्री साई प्रभु ईश्वर अल्लाह श्री साई राम ईश्वर अल्लाह श्री साई राम बुद्ध दोराशा साई कृष्ण बुद्ध दोराशा साई कृष्ण माधव मोहन साई नारायण माधव मोहन साई नारायण प्रेम अवतारा प्रभु साई राम प्रेम अवतारा प्रभु साई राम परमेश्वर श्री साई प्रभु ईश्वरामनंदन साई प्रभु परमेश्वर श्री साई प्रभु ईश्वर अल्लाह श्री साई राम बुद्ध दोराशा साई कृष्ण
अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम। 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन 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 राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। अयोध्यवासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। 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 हे गिरिजापति भवानी शंकर। गिरिजापति भवानी शंकर। हे गिरिजापति भवानी शंकर। गिरिजापति भवानी शंकर। शिव शंकर शंभो। 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 शिव शंकर
शङ्कर शम्भो साई शिव शङ्कर शम्भो साई शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे गिरिजापति भवानी शङ्कर हे गिरिजापति भवानी शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो 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 साई शिव शङ्कर शम्भो साई शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे गिरिजापति भवानी शङ्कर गिरिजापति भवानी शङ्कर हे गिरिजापति भवानी शङ्कर गिरिजापति भवानी शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो 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 साई शिव शङ्कर शम्भो साई शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो We have been discussing Vedic psychology, which focuses on the afflictions of the mind like anger, greed, desire, hatred, etc., and the causes for them and the solutions for eliminating them. Yesterday we discussed that anger and greed are caused by desire. If we create a desire, its fulfillment leads to greed, craving. But if the same desire is obstructed, it results in the outburst of fury. Now, if we do not desire, there is no scope for anger or greed. So, let us try and find out how we can eliminate desire. How many kinds of desires are there? Predominantly 5 kinds. The desire to taste, to smell, to see, to touch, and to hear. God has given us 5 senses, and we seek the objects of these 5 senses. And the whole world is a subject of our senses. But how dangerous are these desires? Kuranga matanga patanga bhringa meena hata pancha bhireva pancha eka pramadi sakathanna hanyate yasevate pancha bhireva pancha. The elephant desired touch of the female elephant. The hunter placed the she-elephant in a trap, and the male elephant was ensnared to its death. The deer loves sweet melodious sound. The hunter starts the melody. The deer is enchanted to it and is shot. The fish was trapped by its desire for taste. The insect was attracted by sight to the fire and got burned to death. The bee was enticed by the aroma.
it sat on the lotus. And in the evening, as the lotus was closing, its attachment prevented it from flying away until it got trapped in the flower. An elephant came by, broke the lotus, ate it, and the bee met its death. These creatures are dying because of the desire of one of their senses. Yes, sevate pancha bhireva pancha. What will happen to those humans who indulge in the gratification of all their five senses? This is desire. And if some fortunate soul gives up desire, the Vedas say that person becomes like God. Yada sarve pramuchyante kama yesya hridishritaah atha martyo mrito bhavatyatra brahma samashnute. The Kathopanishad is stating that fortunate soul who has eliminated desire, Brahma samashnute, becomes God-like. Vimunchati yada kaman manavo manasisthitan tarhyeva pundarikaksha bhagavatvaya kalpate. Srimad Bhagavat Mahapuran states the same thing. If you are able to give up desires, Bhagavatva, you will become like God. Yona kamayate kinchit Brahma bhuyaya kalpate. The Mahabharata is saying the same thing. And this is the peace formula given by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. How will you get peace? He says, Vihaya kamanyah sarvan pumans charati nispriha nirmamo nirahankaraha sashanti madhigacchati. Vihaya kaman, give up desires and find unmitigated peace, the peace that surpasseth all understanding, which can never be snatched away. That is why the four golden truths stated by the Buddha are: there is suffering in this world. The second, that suffering has a cause. The third, the cause of suffering is desire. And the fourth, if desire is eliminated, suffering will be overcome. Since this knowledge is so important, for your ready reference, I have put it down in this recently published book, The Science of Mind Management. In it, you will find a rich treasure chest of tools and techniques distilled from the Vedas with which to master your mind. So the Vedas and other scriptures as well have pinpointed desire as the root cause of all our problems. But today we wish to discover the cause of desire. If we can cut off the line from there will be no scope for desire. Just like if you wish to create a blackout in an entire city, either you go to every house and switch off every light in every room, or you just cut the main power line and there will be a complete shutdown. In the same way, let us try and understand, why do desires arise in us? After all, not everybody desires the same thing. Someone's mind keeps going to cigarettes. Somebody keeps thinking of the chai. Somebody is always thinking of Bollywood movies. What is resulting in the rising of desire? We turn to the Bhagavad Gita for the answer. It states
Sangat sanjayate kamaha, kamat krodho bhijayate. Wherever the mind gets attached, the desire for that object or person arises in us again and again. Now, this is the point to understand. We think the cause of desire is the intrinsic qualities of something. That is not true. What are the intrinsic qualities of alcohol that are causing desire? Does it have good smell? Is it very tasteful? You would say, Swamiji, such a terrible thing. If I take a little, I'll vomit it out. Now that alcoholic, you say, why are you desiring alcohol? It is so foul smelling. I'll give you milk with kesar, pista and badam, so aromatic. He says, who says alcohol doesn't have good smell? When I go by the bar and I get a whiff of the whiskey, I sway from side to side. Now, if alcohol is so foul smelling, how come it's creating desire in the alcoholic? Because his mind is attached. So the cause of desire is not intrinsic qualities, but the attachment of our own mind. Now, parents, they cuddle their child, they'll put their cheek on the child's cheek, they will clean the child's excreta, they'll place their nose lovingly on the child. Ask the same parents, please place your nose on your neighbor's body for 10 minutes. He is smelling. Your neighbor is smelling. Your child is not smelling? Yeah, he should smell. I don't know why he's not smelling. The reason is your own mental attachment. And the reverse of attachment is detachment. Detachment does not mean that you don't own objects. It means that objects don't own you. Plain and simple. So when we allow our mind to get attached anywhere, we become possessed by those objects. It's like how the monkeys are caught in India. You know, there are those street performers who take trained monkeys with them. But how do they get hold of the monkey from the wild in the first place? The hunter takes a narrow-necked bottle and fills it with a few peanuts and digs it into the ground and then hides behind a tree. Now, a monkey comes along. Is there anybody around? Peanuts? Wow! It places its straight, narrow hand through the neck of the bottle and grabs the peanuts. Now, when a fist is formed, it then tries to extract its hand and is unable to. The monkey thinks it has been caught. It screams, "Chee, chee, chee!" The hunter comes up with a stick and hits it on the head. The monkey has been caught. Its gateway to freedom was so simple. All it needed to do was to release those peanuts and be free. The message here is, our attachments to people, places, things, circumstances is what has ensnared us in Maya. We think I am trapped, but we have trapped ourselves by creating these asaktis in our mind. That is why when King Janak asked his Gurudev, Guruvar, what is this Maya of God? Rather than answering him in words, Gurudev went to a tree, embraced it and started screaming, "Leave me, leave me!"
Now Janak saw Gurudev wailing like this and was quiet for a little while. After all, he is Guruji. To say something will be insolence. But after a few minutes, he could not control himself. And he said, Gurudev, please forgive any transgression. The tree is not holding you. You are holding the tree. Gurudev said, Beta, this exactly is Maya. It is not holding us. We are holding it by our attachments. And that attachment is causing the object or the person to come to our mind again and again and again. If your mind is attached to cigarettes, the cigarette will come again, will revisit your mind and keep pinching. Smoke me, I will not let you live in peace. Lord Krishna in the Bhagavad Gita said such a powerful thing. Yogina karma kurvanti sangang tyaktvatma shuddhaye. Who is a yogi? One who is working without attachment. A yogi is not running away from the world necessarily, is living in the world. But the world is not living in him. It's like the boat is in the water, but the water is not in the boat, or the boat will go down. Similarly, what causes the world to live in us? Our own attachments. Lord Krishna explains the link. He says, look, if you are attached, sangat sanjayate kamaha, you will develop desires. And when these desires are fulfilled, there will be cravings. When they are unfulfilled, there will be disgruntlement and anger. So if we allow our mind to be attached to anything, it is unavoidable that we'll get desire, anger, and greed. But if we can free ourselves from attachments, living in the world, we will not have the world living in us. We now need to understand what then is the cause of attachment and how can we be rid of this material affliction. We shall discuss it in the next episode. Om Jai Jagadish Hare Swami Sathya Sai Hare Bhaktadana Samrashaka Bhaktadana Samrashaka Bhakti Maheshwara Om Jai Jagadish Hare Shashi Bhagana Shri Kala Sarva Pranapati Swami Sarva Pranapati Ashrita Kalpaladika Ashrita Kalpaladika Apatandava Om Jai Jagadish Hare Mata Pita Guru Daivam Pariyantayunive Swami Pariyantayunive Nada Brahma Jagannatha Nada Brahma Jagannatha Nagendra Shayana Om Jai Jagadish Hare Narayana Narayana
सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी